कि हमारे राष्ट्रीय मार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग का ग्वालियर झांसी के बीच का ब्रिज अभी बंद है। दोनों तरफ वाहनों की कतार लगी हुई है। जल्दी उसकी मरम्मत करेंगे। लेकिन लांज ब्रिज, फिर रतनगढ़ वाली माता का ब्रिज, सनकुआ ब्रिज, सेवड़ा के पास का ब्रिज, पानी का बहाव इतना ज़बरदस्त है कि उसमें बह गए हैं। कई गांव में अभी पानी है और लोग किनारे पर जहां प्रशासन ने व्यवस्था की है वहां लोगों को रखा गया है। राहत की बात यह है कि प्रशासन की सक्रियता के कारण, हमारी आर्मी के सहयोग के कारण, बीएसएफ, आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की परिश्रम के कारण जाने नहीं गई। लोगों को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। After 3 days long raining in Gwalior Chambal region, now it starts coming the pictures of natural calamity and collapses. And right now I'm reporting from the 4 line which connects Agra to Mumbai, and you can see behind me everywhere along the highway this kind of waterlogging can be seen everywhere. These pictures are coming from, and now I want to show you the picture which is quite disturbing. Here you see the collapse of this truck in along the road, and road was just collapsed completely just because of the flow of the water, and it just cut this road in this way. Now this truck is inside this area where this truck is already fallen down, and we just try to connect those who were traveling or driving this truck, and we have the helper of the driver of this truck. आप ये बताइए कि कैसे क्या हुआ था, कब हुआ और ये ट्रक नीचे कैसे गिरा? कल रात को उधर से गाड़ी आ रही थी, थोड़ा थोड़ा सा इधर आ पानी जाइए। था, तो गाड़ी धीरे धीरे आ रही थी बिल्कुल, तो अचानक एकदम रोड के अंदर चली गई। अच्छा, तो अभी आप लोग यहीं पे पड़े हुए हैं, सरकार प्रशासन कोई आया? प्रशासन कोई मदद भी नहीं कर रहा है। अच्छा, क्या FIR भी नहीं किया है उन्होंने। अगर FIR कर लेते तो हम अपनी गाड़ी को बाहर निकाल देते। So this is what one of the picture is, a kind of instant of the collapses there in Shivpuri district, where even 5 concrete constructed bridges have been collapsed with the flow of the water, and still it's cloudy. It has stopped. Rain has stopped, but it's still cloudy, and it's being expected that now it will be assessed by the administration that how much the loss is there. For your kind of information, I want to tell you that there is a ruin of around thousands of acre crop of the paddy in this area. 5 concrete constructed bridge have been washed away with the flood water, and even the railway track is interrupted, and railway connectivity from Gwalior to Shivpuri to Guna has been stopped, and everywhere it's inundated, the railway track, and even the highways are also interrupted in this way. And this is one of the picture, is a kind of instance that how much loss is there, the loss of the private property, the loss of the government property, and the loss of the farmers, in fact, who have lost their crops. In their crops are completely inundated in the rainy water.